way the spine is designed, it's a bone and then a disc, a bone, a disc, a bone, a disc, all the way up the spine. Now this disc has two functions. One function is it protects the bones by putting a little shock absorber there. Otherwise, we jump off the table and fracture our spine. So these are little shock absorbers. It helps us to protect the bones. The other and more important purpose of that disc is it creates a space between the bones to let these nerves pass through. These nerves are coming from the brain. This is the spinal cord, passes down through the spine. And between each pair of bones, these nerves go to the various parts of the body. So the nerves that are coming up here are sending messages from the face, the eyes, the ears, the nose, the throat, up to the brain, and the brain is sending messages to those areas from the spinal cord. We get down further to about mid-back, messages coming from the brain and two different organs, the heart, the lungs, right? We get down lower. These nerves are innervating the uterus, the bladder, the kidneys, the bowels. So pressure on these nerves will not only cause pain, but it will also cause those things not to function properly, because there's a block in the communication between the brain and whatever organs those nerves are going through. Now this disc, if I take it and I turn it sideways, you can picture a donut with jelly inside. The outside is very thick and the inside is a jelly. When that outside portion of the disc tears, that's a herniated disc. And that jelly leaks out, just like you see here in the model. So this disc, the outside has torn, and the inside material, which is a jelly-like material, begins to ooze out. And when it does, it presses on that nerve. These nerves in the lower back are going into the back muscles, down the legs, and into the feet. So very often you hear patients who have herniated discs, or bulging discs, or degenerative disc disease, who have sciatica, pain running down the leg. And the reason for that is that disc is leaking and pressing on that nerve that's going down the leg. What happens during spinal decompression is we're able to reverse the pressure in the disc and create a vacuum. When we create a vacuum, we can literally, over time, pull that disc material back in off the nerve. Once we take the pressure off the nerve, the pain goes away, and wherever those nerves are going, to whatever body parts, the signal from the brain is uninterrupted and it's flowing properly. Very often we see people who come in who have back pain, but they also have other issues. Sir, why did this technology take too much time to come in India? Well, it took us a long time to develop the technology in the U.S. The only reason we're here is because Dinesh came to the U.S. for treatment. And that's really how we introduced it to India. He came to U.S. for the treatment. He did very well. And he pretty much insisted that we had to bring the treatment to India. Tremendous need here. There's a tremendous need globally. Low back pain is an epidemic everywhere. It doesn't matter what country you go to. But particularly here, there's an enormous need for our treatment. So we had to make a decision after the U.S., where next? Here we are. What are your future plans for India? Future plans for India is to expand the treatment as much as we can. I mentioned earlier our first plan is to get 100 clinics across the country because there's so many people here. We're confident we can do that within probably the next year or two. We'll have 100 clinics. Once we do that, then we're going to identify areas where we're underserved in India and start getting the treatment there as well. And then we also want to begin to focus too on people here who need the treatment, who don't have the means to be able to afford it. But once we get established and the business is a little more robust, then we can focus on those folks as well. How will this machine? Creating a vacuum in the disc. The disc is leaking, right? So we create a vacuum in the disc by using this machine over a period of time, and we can literally begin to get the disc material back inside. So it's a very gentle procedure. People ask all the time, is it very painful? And it's not. Very often patients will fall asleep during the treatment. They literally get so relaxed that they fall asleep. So it's non-invasive, and basically what we're doing is taking pressure off the nerve by creating a vacuum and pulling the disc back off the nerve. That's basically how it works. And how many times the patients have to come? Generally, it's about 18 sessions. 18 sessions. Yeah, and the closer together the sessions are, the better the outcomes.
because the disc moves in very small increments, micromillimeters. So if I treat a patient today and I wait another week, we start all over again. So we ask patients to come in as frequently as possible, and usually at about 18 sessions, they're out of pain. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है। मैं मुंबई में रहता हूँ। अमेरिका में 6 साल मैंने काम किया है और वहाँ पर मुझे कमर में, जैसे कि मैडम ने पूछा L4 L5 क्या है, L मतलब लंबर, L4 L5 ये गद्दी फट के नर्व को डैमेज हुआ है। मुझे लोअर बैक पेन हो रहा था, कमर दर्द बहुत हो रहा था, CAT का पेन बोलते हैं, पैर में दर्द होता है उसको, पेन, टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस बहुत हो रहा था। वहाँ पर US में मल्टीपल सर्जन के पास जाने के बाद सर्जरी बताई और वहाँ पर $80,000 की सर्जरी बताई। सर्जरी के बाद भी कुछ क्या होगा इतनी गारंटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सर्जरी नहीं की। मैं इंडिया चला आया। इंडिया में मल्टीपल सर्जन के पास जाने के बाद भी वहाँ पर कौन सा भी मतलब वो MRI देखने के बाद कोई भी वहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपरली एक्सक्लूडेड कंडीशन थी, डिस्क लीक होकर नर्व को डैमेज किया। तो कंडीशन में सर्जरी एडवाइस कर रहे थे। तो 8-9 महीना मतलब ओवरऑल पेन में गया, खुद का कुछ डेली वर्क नहीं कर पा रहा था, ऑफिस नहीं जा पा रहा था, प्रॉपरली डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर नहीं पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी और फाइनेंशियल ब्रोक हो रहा था। तो फिर क्या करें? ऐसे में मैंने ऐड देखी स्पाइनल डिकम्प्रेशन ट्रीटमेंट US में था और वहाँ पर था कि फॉर स्पाइनल क्या, नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो सर्जरी। मैंने बोला कि एज ए मतलब मैंने अभी कहा कि अगर रात को मुझे वॉशरूम को भी जाना है तो पेन किलर खाने के बाद मुझे 10-15 मिनट थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मैं क्राउड करके जाता था। ये कंडीशन थी और वहाँ पर कहा कि अल्टीमेटली नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो सर्जरी, कैसे पॉसिबल है? दोस्तों को मैंने बताया और वही दोस्तों ने मुझे उठा के वहाँ पर ले गए। डॉक्टर जैसे कैमरा, इन्होंने मुझे अमेरिका में ट्रीटमेंट दी और वहाँ पर मशीन में वहाँ पर मैंने सोने के बाद 95% पेन आधे घंटे में, मेरा पेन है कि नहीं मुझे पता। रोज रात को मुझे तकलीफ हो रही थी, मैं हमेशा मतलब सोचता था उनसे एंगल से पेन न हो, मतलब ऐसा होता था। मगर उस रात को भी नींद नहीं आई, सोया नहीं। क्योंकि हाँ मैं बताऊँ, क्योंकि ये कब से हो रहा है या ऑलमोस्ट हाँ उस रात को आपने जो ये कैसा एरिया, तो उस रात को मैं सो नहीं पा रहा था, मैं ढूंढ रहा था पेन कहाँ पर है, राइट। और उस वक्त अमेरिका में जब रात थी, यहाँ पर दिन थे मुंबई में, मैंने इंडियन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है जिन्होंने मुझे सर्जरी बोली थी उनको कांटेक्ट किया और उनको बोला कि सर आई जस्ट रोट अ क्योर विदाउट अ सिंगल पिल, मतलब कुछ मेडिसिन नहीं ली मगर मेरा पेन ऑलमोस्ट गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है ओनली इन डेवलप्ड कंट्री, एशिया में ट्रीटमेंट नहीं है। तब जाके मुझे ऐसा क्या, तब जाके ऑलमोस्ट 3 साल लगे अमेरिकन डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए। उनको बोला मैंने कि सर वी हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट, वी नीड ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी के बाद बेड पे है या लाइफ ऐसी बर्बाद हो रही है। ये टेक्नोलॉजी है 35 सालों से डेवलप कंट्री में, हमें चाहिए। 3 साल के बाद सर ने हाँ कहा और यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आज हमारे इंडिया में 16 क्लिनिक है, यहाँ पर दुबई में 2 क्लिनिक है। पेशेंट दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई दूर दूर से आते हैं, मतलब गरीब भी आते हैं और फॉरेन से अगर कनाडा, ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, इराक, ईरान दूर दूर से पेशेंट आके स्पाइन की सर्जरी को अवॉइड करके पेन फ्री लाइफ जीते हैं। सर कॉस्टिंग क्या रही? डिपेंड कौन सी सर्जरी करें, राइट, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो वो कंडीशन के लिए 40,000 से लेके 80,000 डिपेंडेबल कौन सी गद्दी है, कितना लेवल प्रॉब्लम है, वो हिसाब से होता है। सर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का ये कमर का दर्द काफ़ी होता है, तो उनके लिए कितना लाभदायक होगा महिलाओं के लिए? बहुत ही, क्योंकि क्या है कि अगर आप चाहे देखें तो मेल एंड फीमेल दोनों को तकलीफ है। वुमेन को एक्स्ट्रा क्यों है कि डिलीवरी के बाद मोस्टली डिलीवरी जो सीजरियन से होती है, राइट, तो जब डिलीवरी होने के बाद उनको या उस समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, उससे भी वैक्यूम होता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। सीनियर सिटीजन 20% और ये टेक्नोलॉजी कितने सालों में आएगी या फिर इंडिया मुंबई में कहाँ पे? मुंबई में ये टेक्नोलॉजी सेंट्रल लाइन में मुलुंड में है, कल्याण में, हार्बर लाइन में वाशी में, वेस्टर्न लाइन में अंधेरी कांदिवली है, पुणे, नासिक, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, पंचकुला, पटना, प्रभादेवी और कल हम मुंबई में भी स्टार्ट करने वाले हैं और 2 क्लिनिक जो है दुबई में स्टार्ट। सर इसके लिए कोई एज लिमिट है? 18 साल से लेके 80 साल तक। क्या कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे क्लिनिक में जाया जा सके? क्लिनिक का नाम क्या है? क्लिनिक का नाम है ANSSI वेलनेस, ANSSI वेलनेस। नंबर है 9 क्लिनिक
का नंबर है 9004726844 और वेबसाइट है www.anssiwellness.com ANSSI wellness.com।